Hello, good morning everybody my dear students. Welcome to my YouTube channel Khanwal Physics. तो आज हमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आड़ को जाउचे. सो आज रो डिस्कशन हबो सिंगल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहा को कहा जाए. तो आज पर्यंत हमें जो डिस्कशन करूथिले प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस थिला. हमरो जो सरफेस ऑफ सेपरेशन जो बाउंड्री जाको हमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहूथिले सेटा हमरा प्लेन थिला. किंतु आज हमें डिस्कशन करिबा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दैट टू सिंगल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो सिंगल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पुनी दी प्रकार. गोटे होचे कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गोटे होचे हमरा कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस. आसे देखिबा सिंगल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस माने कोन. सपोज गोटे सरफेस, this one you see, suppose this is a surface which is spherical. That means this is the part of a sphere. This is part of a sphere. Okay, and this surface separates two media of a different refractive index. Suppose epote hoche gote medium, epote au gote medium. Suppose this is medium number 1, medium 1, and suppose this is medium 2, and you see this is the surface, this is the spherical surface which separates medium 1 from medium 2. So this surface is called your spherical refracting surface. So this may be like this also, it may be like this. तो स्फेरिकल सरफेस हमर एमती भी ही पारे. सो दिस इज एपट को जो मीडियम रहिला ताको हमें कहबा मीडियम 1, या को कहबा मीडियम 2. क्लियर. तो याको कहा जाए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एंड दिस इज योर कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सो स्फेरिकल वर्ड को हमें इग्नोर कर देबा. सो हमें आज तो डिस्कशन हमर आरंभ हो गला स्फेरिकल सरफेस ऊपर. तो ये होचे हमर कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये होचे हमर कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सो दिस इज कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये होचे हमर कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो हमें केमती जानिबा एटा कन्वेक्स आ एटा कनकेव बोली. कहीं ना एपटो चाहिए देखो एटा कन्वेक्स परिका देखा जाउचे, एपट भी जदि चाहिबा देखो एपटटा भी हमको कन्वेक्स परिका देखा जाउछि. एपट देखिले तो को पटो हमें देखिबा. व्हाट इज द रूल? एक्चुअली द रूल इज दैट यू हैव टू सी फ्रॉम द रेडर मीडियम. सपोज यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होछि μ1, यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होछि सपोज μ2. सपोज μ1 is less than μ2, that means optically medium 2 is denser in comparison to medium 1. medium 1 तुलना रे medium 2 रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेहेतु अधिका तेन करी ये होचे हमरा डेंसर मीडियम. सो दिस इज डेंसर एंड दिस इज आवर रेयर मीडियम. एठी भी सेमती. सपोज यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सपोज μ2, and μ1 is less than μ2, that means this is your denser and this is your rarer medium. Clear? Okay. तो हमारा रूल होची कोटा कनकेव और कोटा कन्वेक्स जानिबा पई we have to see from the rarer medium. हमें आखि को कौन करिबा rarer साइड रे रही के देखिबा. तो rarer medium पटु देखिले जदि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ता बॉल्स हेइ के अछि, जदि बॉल्स हेइ के अछि ताहले आकु कहा जिवो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सेमती रेरर पटु देखिले रेरर मीडियम पटु जदि देखिबा जदि एटा पूरा डिप्रेस हेइ के अछि ताहले आकु कहिबा हमें कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस. क्लियर. तो सब बेले को पटु देखिबा हमें रेरर मीडियम पटु देखिबा. तो रेरर मीडियम पटु देखिले जदि सरफेस ता बॉल्स हेइ के अछि ताहले आकु कहा जिवो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस.
जदि रेरार मीडियम पटु देखिले एटा डिप्रेस हेकी अछि दबी की अछि सरफेस ता ताला को कहजिबो योर कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस नो कंफ्यूजन अच्छा तापर सम टर्म्स जोटा कि हमें आगुर पढ़ी मिरर केस रे भी पढ़ी एक्जाक्टली सही प्रकार टर्म गुड़ाक टिके मो फास्ट टाको टिके मो कवर करूची the most bulging point the most bulging point in case of convex and most depressed point in case of concave surface is called your pole and it is represented by p आपको हमें p द्वारा represent करिबा clear to all of you this is the pole and याकू जदि देखो this is the part of a sphere ए जो पोर्शन देखु this is part of a sphere this is part of a sphere तो आपको जदि मु एक्सटेंड कर देबी it will be a sphere like this it will be a sphere like this तो तार तो गोटे सेंटर कोठी गोटे थिबो कि नहीं so this center is called your center of curvature this c is called your center of curvature तो center of curvature is the center of that sphere of which this surface forms a part exactly एठी मध्ये हम देखि परिबा तो आकु जदि हम स्फीयर कंप्लीट करिबा दिस विल बी लाइक दिस एटा हो गोटे देखो स्फीयर होई जिवो एटा गोटे एमती स्फीयर होई जिवो क्लियर तार भी गोटे सेंटर थिबो कि नहीं तार भी गोटे सेंटर थिबो सो दैट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ व्हिच दिस सरफेस फॉर्म्स ए पार्ट एंड पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जॉइन कले पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जदि हमें जॉइन करिबा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जदि हमें जॉइन करिबा we will get a straight line so the straight line that passes through pole and center of curvature and extended to both the sides is called your principal axis so this is my principal axis तो एठी भी हमारा principal axis कनिबा तो this is the principal axis extends on either side clear so this is my center of curvature this is my pole and this is my principal axis clear suppose आपको ना देबा हमें x या को ना देबा y this x y is nothing but your aperture here also x y is the aperture the diameter of the refracting surface area the diameter of the refracting surface area ए जो जति की सरफेस रे हमर रिफ्रैक्शन हेई परिबो तार डायमीटर ता जदि आपको हमें सर्कुलर आउटलाइन गुडे नेबा देखो एटा जो गुडे स्फीयर रो पार्ट ताको जदि हमें देखिबा इट इज ए सर्कुलर आउटलाइन तो सर्कुलर आउटलाइन रो ए जो डायमीटर को कहा जाए एपरेचर and the distance between your pole and center of curvature is nothing but your radius of curvature so this is the radius of curvature this is also radius of curvature center pole to center of curvature pole थारू center of curvature रो दूरता को हमें कहूचे radius of curvature तो radius of curvature is the distance between pole and center of curvature or it is the radius of that sphere of which this spherical surface forms a part clear so radius of curvature so this is my convex spherical refracting surface convex spherical refracting surface so refractive index suppose hochi mu this is my denser medium ये होची हमरा rarer medium the most bulging point is our pole okay तापर principal axis टानिबा principal axis is a straight line that passes through the pole and center of curvature pole और center of curvature को join करूथिबा सरल रेखा हमर होची
principal axis. This is my principal axis. This is my principal axis. Okay. So it कोठी हमारा center of curvature थीबो कि नहीं? So this is the center of curvature. Clear? तो center of curvature को जदि गोटे straight line टानिबा so ये ही जीवा हमारा normal always passes through the center of curvature. Normal always passes through the center of curvature. So आपको हमें point of incidence बोली ना देबा. Suppose point A गोटे object ने बाइठी. Suppose O is the object point. इठो गोटे paraxial ray हम consider करिबा. Although it appears marginal, किंतु हमें assume करिचे all the rays will be paraxial. That means the incident ray and refracted ray, they run very close to principal axis. Principal axis रे भाबी दियो जे पूरा पाखरे पाखरे जाईची, पूरा क्लोज एमती जाईची बोली भाबो. किंतु जदि एबे एमती टाणीबा डायग्राम रे किछि क्लैरिटी रहिबनी. तेनु करी मु टिके दूर को लेची मार्जिनल रे परिका देखा जाउची, but it is paraxial. Okay, so this is my angle of incidence I. Angle of incidence I. Okay, this is my incident ray and this is my normal. This is my angle of incidence. अच्छा सुना, ये होची हमारा converging diffracting surface, convex refracting surface कही परिबा और converging refracting surface हमें कही परिबा. अच्छा देखो जदि गोटे रे आसिकी पड़िबो convex refracting surface उपरे और converging refracting surface उपरे ताहले rarer medium रो denser medium आड़ को रह जाउची, तो it will bend towards the normal. It will bend towards the normal. तो रे कोन हबो bend हेकी आसिकी refract हेकी एठी पड़िबो. So this is my refracted ray. This is my refracted ray. And refracted ray normal सहित जतिकी एंगल सृष्टि करूची, that is my angle of refraction. That is my angle of refraction. Clear to all of you? Okay. ताहले हमको तो मिनिमम दुईटा रे कंसीडर करबा को पड़िबो इमेज फॉर्मेशन पई. ताहले आउ गोटे सेकंड रे नै जिबा along the principal axis itself. Normal incidence करे देबा. हमें जानिचे for normal incidence there will be no deviation. There will be no deviation. पूरा रे exactly deviation न होई कि चलिबो. That means this is your refracted ray for this incident ray. ताल देखो एई जो refracted ray आ सेकंड refracted ray ए दीटा तक जाई कि गोटे पॉइंट रे कन्वर्ज करूचंदी. जदि सतरे कन्वर्ज कले ताहले हमरो रियल इमेज फॉर्मेशन हबो. So this is the figure for the real image produced by your spherical convex surface. The spherical convex refracting surface producing real image. ये होचे diagram. Clear to all of you? अच्छा सुनो, हम गोटे काम करिबा. So we know this is R, radius of curvature. This is object distance U. This object distance U. Okay, and you see this is image distance V. All the measurements are made from the pole, the most bulging point in case of convex refracting surface. Suppose এই जो incident ray principal axis सहित जतिके एंगल सृष्टि करूची ताको suppose मु ना रखिली alpha. अच्छा इमेज जो रिफ्रैक्टेड रेटा प्रिंसिपल एक्सिस सहित जतिके एंगल सृष्टि करूची ताको मु ना देली बीटा एंड नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को जतिके एंगल सृष्टि करूची ताको सपोज मु ना देबी गामा. क्लियर? ए जो रेयर मीडियम रो रिफ्रैक्ट इंडेक्स को हमें μ1 बोली मानिबा आ यार रिफ्रैक्ट इंडेक्स को μ2 बोली मानिबा. दिस इज द डायग्राम. सो डायग्राम होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट. तेनो नीट एंड क्लीन रे परीक्षा रे सब बेले करबो बड़ डायग्राम टानिबो. इट शुड बी डिस्टिंक्ट.
all the descriptions should be distinct. Okay, now we are going to find out a relationship among u, r, v, mu1 and mu2. को relationship तांगा मानक भितर अछि ताको हमें derive करिबा को जाउछे. Derivation is very simple. Look at me. So using Snell's law को केमती यूज करिबा जोठिरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिबा सपोज mu1 sin of सेठिरो एंगल I is equal to सेकंड मीडियम को चला सेठिरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 times sin of सेठिरो एंगल R. ये होची स्नेल्स लॉ लिखिबार तरीका. भूल हेबार चांस नहीं. जोठिरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिबो sin of सेठिरो एंगल पुणी सेपट को जीवो एक्जेक्टली सेठिरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुणन sin of सेठिरो एंगल. So this is the Snell's law. As the aperture is very small, aperture को जेहेतु हमें बहुत स्मॉल बोली माननी छे, and the rays are paraxial, सब गुड़ाक रे हमरा paraxial बोली हमें assume करिचे, तो definitely I and R are very small. I and R are very small. So under this condition, sin I limit I tends to 0 for paraxial rays will be I, and limit R tends to 0 sin R will be approximately R. Under this limiting condition, sin I जगह हमें I put करी परिबा and sin R जगह हमें R put करी परिबा. ओके, तो एतिकी जगह को मु पुणी एटा टिके लिखि दियो. पॉज करी कि वीडियो को पॉज करो, एतिकी लिखो. तापरे मु एतिको इरेज कर दोउची माने जगह हमको दरकार. We need space for derivation. तो sin I जगह रे हमें I सब्स्टिट्यूट करिबा. So this implies mu1I is equal to mu2R. Let this be our equation number 1. Clear? अच्छा, तापर कौन करिबा हमें डायग्राम को जिबा. Listen carefully. एठी गोटा में परपेंडिकुलर ड्रॉप करिबा. ए रो गोटे परपेंडिकुलर हमें ड्रॉप करिबा. Let this be M. Clear? अच्छा, डायग्राम को टिके स्टडी करिबा. देखो O A C in a triangle OAC ट्रायंगल को टिके नजर कुनिया. OAC मु टिके तुमको एट देखो जी. देखा एटा होची O, ये होची A, ये होची C, एमती अछि. देखो ए एंगल टा अछि अल्फा, ए एंगल अछि गामा, आउ ए एंगल अछि देखो I. हमें भलरे जानी छे, we know the external angle I will be equal to sum of opposite internal angles alpha plus gamma. हमें इटा जानी छे कि नहीं. ट्रायंगल रो ई प्रॉपर्टी को हमें ज्योमेट्री रु जानी छे. तो एक्सटर्नल एंगल must be equal to sum of opposite internal angles. I is equal to alpha plus gamma. तो एठो हमें लिखि परिबा in triangle I is equal to alpha plus gamma. Let this be equation number 2. Similarly, in triangle O नहीं IAC or ACI. ओके, तो ACI आपको एमटी भी लिखि परिबा हमें ACO एमटी मन रखिबा पई सुविधा हबो. ACO माने देखो
AC होचे हमर नॉर्मल तो AC सहित ऑब्जेक्ट को प्रथम ट्रायंगल AC सहित इमेज को द्वितीय ट्रायंगल मन रखिबा पई सुविधा हबो ACO रो मिलिला हमको I is equal to alpha plus gamma and in triangle ACI ठीक है देखो ACI ए ट्रायंगल को मोटा होचे देखो यू सी ACI एमती अच्छी कि नहीं तो देखो आपको जब हमें एक्सटेंड करिबा दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस दिस इज नॉर्मल ये अच्छी देखो A ये अच्छी I ये अच्छी C ये अच्छी बीटा दिस इज योर R this is your R and this is gamma डायग्राम को देखो एक्सटर्नल एंगल किया हमरा एक्सटर्नल एंगल होची हमरा गामा तो गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा देखो डायग्राम को गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा the external angle is equal to sum of the internal angles तो हमें लिख परिबा गामा is equal to R plus beta equation number 3 ठीक है मैं देखे वीडियो रन करूची कि नहीं ओके तो करंट पड़ेला सो इन्वर्टर रे केवल दुईटा लाइट जळुची बाकी सब बंद हो जाइए तो प्लीज बियर ओके I is equal to alpha plus gamma and gamma is equal to R plus beta तो एठो हमें बाहर करिबा आपको इक्वेशन 3 न देई कि एठो R रो वैल्यू बाहर कर देबा तो R will be equal to gamma minus beta तो gamma minus beta तो R को टिके अलग लिखिबा gamma ठो so this is R and this is gamma आपको देबा इक्वेशन नंबर 3 so from equation 2 and 3 we will get I and R so using equation 2 and 3 in equation 1 we get now equation 1 becomes mu 1 times I is equal to alpha plus gamma is equal to mu 2 times R is equal to your gamma minus beta clear चलो आगो बढ़िबा आगो ओपन करिबा तो mu 1 alpha plus mu 1 gamma is equal to mu 2 gamma minus mu 2 beta ओके अच्छा गोटे काम करिबा तो mu 1 alpha mu 2 beta को एपट को नहीं आसीबा प्लस mu 2 beta is equal to ए mu 1 gamma को हमें सेपट नहीं जिबा आउ हमें gamma को कॉमन नहीं जिबा तो mu 2 minus mu 1 times gamma होगा कि नहीं ओके तो mu 2 minus mu 1 times gamma को कॉमन नहीं गली एक टिके पुणी सुनो as all the rays are paraxial our spherical refracting surface is very small that means its aperture is very small ताले all the angles तुम्हारा I R alpha beta gamma सब गुड़ा कहउचंदी very small they are assumed very small because the rays are paraxial ray टा पूरा principal axis को लगी पाखा पाखी पूरा it will move माने very close to your principal axis ताले alpha भी small होबो gamma भी small होबो beta भी small होबो ताले हमें जानी चे limit alpha tends to 0 sin alpha is equal to कौन alpha but limit alpha tends to 0 cos alpha is equal to कौन 1 हमें जदि रेशियो नहीं जीवा ताहले limit alpha tends to 0 tan alpha will be equal to alpha listen ताहले जोठी हमर alpha अछि जदि alpha टा very small हुए जोटा कि हमर assumption रे हमें भाबी छे alpha beta gamma are very small तो alpha जगह रे केते लिखि परबा हमें tan alpha लिखले किछ असुविधा नहीं तो alpha जगह रे हमें tan alpha लिखि परिबा under the condition of paraxial rays okay so
लाइट आसीगला वेरी गुड तो यू सी दिस इंप्लाइज mu1 अल्फा जगह में लिखि परिबा tan अल्फा प्लस mu2 बीटा जगह लिखि परिबा tan बीटा is equal to mu2 minus mu1 times gamma जगह में लिखि परिबा tan gamma ओके मैं देखु वर्तमान ए लाइन टा वीडियो रे आसुची कि नहीं ठीक अछि आ गुड लाइन भी लिखि परिबा हमें ओके आई एम कमिंग टू दिस अच्छा you see so this implies mu1 times tan alpha ए डायग्राम को देखो OAM ए राइट एंगल ट्रायंगल को देखो समझते OAM ए ट्रायंगल रो tan alpha मते कहि परिबो केते tan alpha is equal to height divided by base height हो जे हमरो AM divided by MO होबा कि नहीं प्लस mu2 times टिके मु इठी इरेज करूची ओके mu2 times tan बीटा को देखो कोठी अछि ताले ANI ए राइट एंगल ट्रायंगल को देखो सो इठी tan बीटा विल बी इक्वल टू योर हाइट AM डिवाइड बाय MI होबा कि नहीं इज इक्वल टू mu2 minus mu1 of tan gamma ए ट्रायंगल को देखो AMC ए ट्रायंगल को जब देखिबा हम लिखि परिबा हाइट होची AM divided by MC so this AM and AM cancels out from each term तो रिमेनिंग जिनिस को हम एमती लिखिबा mu1 divided by MO plus mu2 divided by MI will be equal to mu2 minus mu1 divided by MC clear so this implies mu1 divided by MO देखो जदि हमरा रे गुडा को पैराक्सियल हबो आ एपरेचर जदि वेरी स्मॉल हबो देखो रेट जदि पैराक्सियल हबो ताले ए पॉइंट बहुत क्लोज रहइबो पी रो पूरा पाखा पाखी रहइबो पी रो पूरा पाखरे रहइबो पी रो जदि पूरा पाखरे रहइबो ताले नॉर्मल जदि हम एम ती टाणीबा ताले एम इज वेरी क्लोज टू पी यू सी एम इज वेरी क्लोज टू पी ए पॉइंट को जत्ते तळको हम आनिबा ए को जत्ते तळको आनिबा ए एम ता सेते क्लोज हबो पी आडो को as the ray is paraxial ताले एटा पाखा पाखी एट रहइबो तो एटी जदि नॉर्मल मु पकेबी m is very close to p ताले m जगह रे मु जदि p लिखिबी there will be no problem at all ताले m जगह रे हम p लिखि परिबा po plus mu2 divided by pi is equal to mu2 minus mu1 divided by pc ओके अच्छा मते टिके कहि परिबो कि PO कौन PI कौन आउ PC कौन तो PO it is the distance of the object from the pole this is your U object distance so this is my object distance this is the distance of the image from the pole this is the image distance and PC is nothing but your radius of curvature of the spherical refracting surface so according to sign convention mate koi paribo according to sign convention U is your negative because the measurement should be made opposite to the direction of the incident ray this is my incident ray ये देखो incident ray এই দিগরে গতি করুচি কিন্তু পুল র লেফট কো আসি কি মতে মেজারমেন্ট করিবো পড়ুচি দ্যাটস व्हाई u is negative তো pi देखो इंसिडेंट रे र दिगरे मेजरमेंट करिबो पड़ुची दैट्स व्हाई v is your positive and your r is also positive now we will substitute these values in above equation
ताले कौन मिली देखो we will get mu1 divided by PO, this is minus u plus mu2 by V is equal to mu2 minus mu1 divided by R. So this implies aku first रे लिखिबा mu2 by V minus mu1 by U is equal to mu2 minus mu1 divided by R. So this is the final relationship or final formula which includes all the physical quantities involved in this figure. Mu2, the refractive index of the denser medium, that means where the refracted ray lies. Okay, this is the absolute refractive index of the radar medium where your incident ray lies, and R is the radius of curvature. So this is the relationship. Okay, so video को पुणी रिपीट करके देखो, डेफिनेटली तुमरो डेरिवेशन रे कोनोसी प्रॉब्लम रहइबनी, निश्चित भाबे तुमको बुझा पड़िबो। वीडियो को लंबा करबानी, मोर नेक्स्ट वीडियो रे ए फार्मूला को बेस करके हमें बहुत प्रॉब्लम हमें सॉल्व करिबा, सो दैट योर कांसेप्ट विल बी मोर क्लियर. Clear to all of you? So this is the derivation, and this formula is applicable for all surfaces. देखो convex surface हो कि concave surface हो, object हमरा rarer medium रे रहो कि denser medium रे रहो, there will be no problem at all. हमरा object real object ही पारे, virtual object ही पारे, all situation पाई हमें गोटे formula की यूज करिबा, किंतु हमें कौन करिबा टिके कनिंगली ताको डील करिबा. ओके, सब बेले ताको जनरलाइज करिबा आको जनरलाइज करिबा, केमती जनरलाइज करी केमती यूज करिबा. तो नेक्स्ट क्लास रे तुमको मो नेक्स्ट वीडियो रे क्लियरली तुमको मो एक्सप्लेन करिबे. आ वीडियो को लंबा करिबानी. थैंक यू ऑल.